Hello students of Class 7, I am Sana Ahmed. Let's start with Physics Chapter 2 Motion. In this chapter, we are going to learn about motion as a change in position of an object with respect to time. Types of motion, that is translatory, circulatory, oscillatory, repetitive, periodic and non-periodic, and random motion. Uniform and non-uniform motion, concept of distance and speed and average speed. Weight concept, difference between mass and weight. Kids, before I start the chapter, here is an introduction related to the chapter. We live in a world that is constantly changing and moving. The movements of animals, of the vehicles, the rivers, and are easily observed. Less obvious but just as important are the motion of plants as they grow and respond to light and other stimuli, and the motion of atoms, the building blocks of matter. Movement is a central part of the universe in which we live. To understand motion is to understand one of the most fundamental aspects of ourselves and our world. It is a common observation that all living objects, whether plants or animals, can move in some way or the other way. The motion in animals is more apparent than the motion in plants. A dog running to catch a ball thrown in the air, a horse pulling a cart on the road, a pair of oxen pulling the fluff in the fields are all examples of motion in animals. Animals also have the ability to move a part or whole of their bodies. We ourselves have the ability to move, run and jump. Rest and motion. Rest. An object is said to be at rest if it does not change its position with respect to the stationary surroundings with the passage of time. जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बाकी ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से नहीं बदलता है, तब उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या फिर स्टेशनरी पर है. मोशन. An object is said to be in motion if it changes its position with respect to the stationary surroundings with the passage of time. जब एक ऑब्जेक्ट बाकी सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि वो मोशन पे है. टाइप्स ऑफ मोशन. Motion is classified as being of four types. Translatory motion is of two types: rectilinear and curvilinear. Rotatory motion, oscillatory and vibratory motion. Translatory motion. A translatory motion is a motion in which all the parts of the body move through the same distance in the same interval of time. किसी भी ऑब्जेक्ट को हम तब ट्रांसलेटरी मोशन में कहते हैं जब उस बॉडी के सारे पार्ट्स एक ही टाइम में एक ही डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं. नाउ ट्रांसलेटरी मोशन इज़ ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज़ रेक्टिलिनियर मोशन एंड सेकेंड वन इज़ कर्विलिनियर मोशन. Let's know about rectilinear motion. The motion of an object is said to be in rectilinear if it moves along a straight line. जब एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू मोशन में होता है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि वो रेक्टिलिनियर मोशन में है. एज एग्जाम्पल वी कैन टेक अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, अ बर्ड फ्लाइंग along a straight line. Curvilinear motion. A motion of an object is said to be curvilinear if it moves along a curved path. किसी भी ऑब्जेक्ट को हम तब कर्विलिनियर कहते हैं जब वो एक कर्व पाथ मूव करता है. एग्जाम्पल यू कैन टेक अ javelin or shot put thrown by an athlete. Now, rotatory motion. A motion is said to be rotatory if an object moves in a circular path around a fixed axis without changing its position. जब एक ऑब्जेक्ट एक फिक्स
एक्सिस पर रहता है और अपनी पोजीशन ना बदलते हुए वो सर्कुलर पाथ में जब मूवमेंट करता है तब हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रोटेटरी मोशन में है। एग्जाम्पल, motion of a potter's wheel, motion of an electric fan. Oscillatory motion. An oscillatory motion is the back and forth motion which takes place about a mean position. Oscillatory motion क्या होता है? इसमें जब एक ऑब्जेक्ट आगे और पीछे की तरफ जाता हुआ हमें दिखता है तो ऐसे मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन की कैटेगरी में रखते हैं। Example, motion of a simple pendulum, the motion of a swing. Vibratory motion. Vibratory motion is a motion in which a part of a body undergoes oscillatory motion and the remaining body stays as at rest. Vibratory motion भी एक हिसाब से oscillatory motion का ही पार्ट है, लेकिन उसका जो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं उस बॉडी के वो रेस्ट में रहते हैं, मतलब वो पूरी तरीके से मूव नहीं होते हैं। एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार। पेरियोडिक मोशन. अ मोशन इज सेड टू बी पेरियोडिक इफ इट रिपीट्स itself after a fixed interval of time. जब एक ऑब्जेक्ट एक फिक्स टाइम में एक ही तरह का मोशन रिपीट करता है तब हम उसे पेरियोडिक मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इन 37.3 days, beating of our heart. Non-periodic motion. A motion is said to be non-periodic when it repeats itself at non-regular intervals of time. जब एक ऑब्जेक्ट बिना किसी रेगुलर टाइम पीरियड के खुद ब खुद एक ही मोशन रिपीट करता है तो उसे हम नॉन पेरियोडिक मोशन कहते हैं। Just like the motion of a car driving several blocks on the busy downtown street. Uniform and non-uniform motion. Uniform motion is a kind of motion in which a body covers equal distances in equal intervals of time. इस मोशन में बॉडी हर बार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, ना ज़्यादा ना कम, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। एज एग्जाम्पल, अ कार गोइंग along a straight level road at steady speed, a train going along the tracks at steady speed, earth moving around the sun in a uniform motion. Non-uniform motion, on the other hand, is the kind of motion in which a body covers unequal distances in equal intervals of time, no matter how small the time intervals are. इस तरीके के मोशन में बॉडी इक्वल इंटरवल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कार है जो पहले 2 सेकेंड में वो 10 मीटर का एरिया कवर कर रही है, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड में क्या कर रही है, वो 15 मीटर का डिस्टेंस वो कवर कर रही है। तो हर 2 सेकेंड में वो अपना जो डिस्टेंस है यू कैन सी वो हर बार अलग अलग कवर कर रही है। तो इस तरीके की मोशन में को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल, अ हॉर्स रनिंग इन अ रेस, अ बस ऑन इट्स वे थ्रू द मार्केट, अ बाउंसिंग बॉल। डिस्टेंस, it is defined as the actual path followed by a body between the points between which it moves. किसी भी बॉडी ने शुरुआत से कितना पाथ कवर किया है वही उस बॉडी का डिस्टेंस होता है। सपोज़ आप घर से निकले और मार्केट तक गए, आपने जितना भी कवर किया है वो पाथ मार्केट तक जाने का, वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्टेंस जो होता है किसी भी बॉडी का टाइम के हिसाब से डिक्रीज़ नहीं करता है। स्पीड is defined as the ratio of the distance traveled by a body to the time taken to do so. किसी भी बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितने टाइम में ट्रेवल किया है उसी के रेशियो को हम स्पीड कहते हैं। मैथमेटिकली हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम से। It is measured in SI unit in meter per second. Weight. It is a measure of the force of gravity on a body. Weight is the force with which a body is attracted towards the earth.
on another celestial body. Weight is equal to the product of the object's mass and the acceleration of gravity. Therefore, W equals mg, where m stands for mass and g stands for its gravity. Units of weight. Weight is measured in two systems, absolute and gravitational. In SI and gravitational system, weight is measured in kilogram force and in CGS in gram force. 1 kilogram force is the force with which the earth attracts a mass of 1 kg. In SI and absolute system, weight is measured in Newton and in CGS in Dye. Weight is measured with the help of a spring balance or digital balance as shown in figure number 2.9 and 2.10. Here is a recap for you all. Kids, read this recap related to the chapter thoroughly and also read the chapter thoroughly through this video. Thank you for watching this video. We will meet again through videos. Till then, stay home, stay safe.